Hello friends, welcome all of you on my YouTube channel here Anand's Nursing File. Today in this video we are going to learn about the nursing care plan that is chickenpox, and through this video you learn this care plan very easily, and this video helps you to write the nursing care plan in examination work purpose or for the assignment work purpose. तो फ्रेंड्स आज हम वीडियो में चिकन पॉक्स का नर्सिंग केयर प्लान या देखेंगे किस तरह से हम नर्सिंग केयर प्लान तैयार करते हैं, और इस वीडियो की सहायता से आप आसानी से यहाँ चिकन पॉक्स का नर्सिंग केयर प्लान लर्न कर सकते हो। तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर नर्सिंग केयर प्लान ऑन चिकन पॉक्स। नर्सिंग केयर प्लान में हम डिफरेंट नर्सिंग प्रोसेस स्टेप्स यूज़ करने जा रहे हैं, जिसमें नर्सिंग असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग, रेशनल, इम्प्लीमेंटेशन एंड एवेल्यूशन, ये नर्सिंग स्टेप्स होंगे। नर्सिंग केयर प्लान से पहले एक हम शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखते हैं पर चिकन पॉक्स का। चिकन पॉक्स इज ए हाईली कंटेजियस डिजीज कॉज्ड बाय द varicella zoster virus. It can cause an itchy blister-like rash. The rash appear first on the chest, back, and face, and then spread over the entire body. This is chickenpox. And next, sign and symptoms. Here, chickenpox develop in the stage before the rash appear. There may be fatigue or general feeling of being unwell, malaise, fever that lasts 3 to 5 days and is usually less than 102 degree Fahrenheit or 39 degree centigrade. Loss of appetite, muscle or joint ache, cold-like symptoms such as cough or runny nose, headache. After these symptoms, the following will happen: an itchy rash will present on the face, body, or inside the mouth. The rash will develop in spots and sometimes can also appear on the eyelid or the genitals. The rash will develop into fluid-filled blister that will turn cloudy. These blisters may take 3 to 5 days to heal, as there may be many blisters. Some may heal sooner than others. The blister will become scabs. The scabs will fall off after about a week. Here, this is a picture. You can see here the chicken pox rashes or lesions. Next, here nursing care plan first. नर्सिंग केयर प्लान नंबर फर्स्ट देखते हैं, इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी। नर्सिंग केयर प्लान नंबर फर्स्ट होगा यहाँ पर इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी, जिसमें देखते हैं नर्सिंग असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग, रेशनल, इम्प्लीमेंटेशन एंड एवेल्यूशन स्टेप्स। फर्स्ट, नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा, पेशेंट verbalize about pain on affected skin. Objective data, observe skin for rash on the face and tongues, maculopapular rash, blister and or scab. On the basis of these assessment data, we write the nursing diagnosis. Here, impaired skin integrity related to infection of the skin secondary to chickenpox. गोल होगा to maintain normal skin integrity, nursing intervention, planning phase, directional and implementation. नर्सिंग इंटरवेंशन में हमको जो इंटरवेंशन पेशेंट को प्रोवाइड कराने वो लिखते हैं यहाँ पर रेशनल में, द स्पेसिफिक रीजन बिहाइंड दिस इंटरवेंशन एंड इम्प्लीमेंटेशन इज द एक्टिंग फेज। तो देखते हैं फर्स्ट इंटरवेंशन, assess the patient's skin or his or her whole body, rational to determine the severity of varicella, chickenpox and any affected areas that require special attention or wound care. Implementation होगा assess the skin integrity. Next, isolate the patient is in his or her room ideally during the first 7 days since the appearance of the rash until after the blister are completely dried up. Rational होगा varicella chickenpox is an infectious communicable skin disease. Implementation होगा isolated the patient. Next, third intervention होगा the affected areas should be washed first in water. Wet compressed may also be used. Rational होगा cleansing the skin. Implementation होगा cleanse the skin affected area.
Next, application of the prescribed antibiotic creams or ointment directly to the affected area. रेशनल होगा टॉपिकल एंटीपीरियाटिक क्रीम promote relief of itching. Implementation होगा antipyretic cream applied as needed. Number 5, administer antiviral medications as prescribed. रेशनल होगा varicella chickenpox can be treated through the use of antiviral therapy. Implementation होगा antiviral medication administered. Number 6, educate the patient and carer about proper skin care through washing the rash with soap and water. Reshnuga, it is important to maintain the cleanliness of the affected area by washing with mild soap and water. Implementation of education given to the patient. Number 7, advise the patient and carer to prevent the scratching the affected area. Reshnuga, the rash may cause itching. Implementation of advise the patient with preventing scratching. After these providing these interventions, we write the evaluation steps for this केयर प्लान. यार इवेल्यूशन होगा यहाँ पर फर्स्ट केयर प्लान का. स्किन इंटीग्रिटी मेंटेन, जो हमारा गोल था टू मेंटेन स्किन इंटीग्रिटी, वो हमने अचीव किया है बाई डिफरेंट इंटरवेंशन जो हमने पेशेंट को प्रोवाइड करा है. तो इस तरह से हम यहाँ फर्स्ट केयर प्लान को कंप्लीट करते हैं. नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर सेकंड. नर्सिंग केयर प्लान नंबर सेकंड होगा यहाँ पर हाइपरथर्मिया. तो देखते हैं इसमें नर्सिंग असेसमेंट. Subjective data patient says that I am feeling warm. Objective data assess the vital sign temperature less than 102 degree Fahrenheit or 39 degree Celsius. Nursing diagnosis देखते हैं hyperthermia related to infectious process. गोल होगा to reduce temperature. Planning और intervention देखते हैं first observation of the general condition of the client with the vital sign every 2 hours. Rational होगा help to provide prompt intervention. Implementation होगा observe the general condition of the client. Number second, advise that client use thin or loose clothing. Rational होगा provide comfort to the patient. Implementation होगा advise the client. Number third, advise the client to take plenty of fluids. Rational होगा to maintain fluid balance. Implementation होगा advise to fluid intake. Number fourth होगा provide calm and cool environment. Rational होगा to provide comfort and reduce fever. Implement इसको provided calm and cool environment. Number 5, administer antipyretics as prescribed. Rational होगा antipyretics reduce fever और implementation होगा antipyretics administer. After providing these interventions, we write the evaluation steps for this care plan. तो यहाँ पर second care plan का evaluation होगा. Now patient having normal body temperature, में जो goal था to reduce temperature, वो हमने achieve किया by different interventions. इस तरह से हम यहाँ सेकंड केयर प्लान को कंप्लीट करते हैं. नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर थर्ड फॉर चिकन पॉक्स. होगा रिस्क फॉर इन्फेक्शन. इसमें देखते हैं कौन कौन से स्टेप्स यहाँ लिखते हैं. तो फर्स्ट देखते हैं नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा नॉट एप्लीकेबल बिकॉज दिस इज द रिस्क डायग्नोसिस. ऑब्जेक्टिव डाटा असेस द साइन ऑफ इन्फेक्शन. फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू डैमेज स्किन टिश्यू गोल होगा टू रिड्यूस द रिस्क फॉर इन्फेक्शन. प्लानिंग रेशनल इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं. प्लानिंग फर्स्ट assess the patient's skin on his or her whole body. Rational होगा to determine the severity of the chickenpox and any affected area that require special attention or skin care. Implementation होगा assess the patient's skin or his or her whole body. Number second, isolate the patient in his or her room during ideally during the first 7 days since the appearance of the rational होगा chickenpox is an communicable skin disease. Implementation होगा isolated the patient. Number third, administer antiviral antibiotics medication as prescribed. Chickenpox is generally treated through the use of antiviral if the rash lead to other skin breakdown which then get infected by bacteria. Antibiotics is prescribed. Implementation of medicine administered as prescribed. Number four, educate the patient and carer about proper wound hygiene. It is important to maintain the cleanliness of the affected area. Implementation of education given. Number 5, trim the patient's fingernail and ensure frequent hand hygiene.
रेशनल होगा लॉन्ग फिंगर नेल्स टेंड टू हार्बर मोर बैक्टीरिया स्क्रैचिंग कॉज स्किन डैमेज. Implementation होगा trim the patient's fingernail. After providing these interventions, we write here the evaluation steps for this care plan. तो देखते हैं यहाँ पर केयर प्लान नंबर 3 का evaluation. तो evaluation का risk for infection reduce. जो गोल था to reduce risk for infection वो हमने अचीव किया है. तो इस तरह से यहाँ नर्सिंग केयर प्लान नंबर 3 को हम कंप्लीट करेंगे. नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर 4 फॉर चिकन पॉक्स. नर्सिंग केयर प्लान नंबर 4 हो गया यहाँ पर डिस्टर्ब बॉडी इमेज. देखते हैं इसमें नर्सिंग असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, intervention, rational implementation, evaluation. First, nursing assessment is subjective. The patient verbalize negative feeling about the bodily change, talk negatively about physical change or body part. Objective data देखते हैं. Hiding of the affected body part. Nursing diagnosis होगा duster body image related to rash on the skin. गोल होगा patient freely express and verbalize feelings on the skin condition and resume daily फंक्शनल एक्टिविटी. इंटरवेंशन होगा फर्स्ट यहाँ पर एवेल्यूएट पेशेंट परसेप्शन अबाउट वन सेल्फ एंड फीलिंग ऑन हिज और हर चेंज इन द अपीयरेंस. रेशनल होगा चिकन पॉक्स अफेक्ट द एक्सटर्नल अपीयरेंस एंड दिस डिस्टिंक्ट चेंज में हैव इम्पैक्टेड देयर परसेप्शन एंड सेंसिटिविटी. इम्प्लीमेंटेशन होगा evaluated the patient's perception. Number second, carefully observe the patient demeanor relating to his or her appearance. Rational होगा there is a tendency that the patient will conceal any issues that have been with their appearance on body. Implementation को observe the patient demeanor. Number third, encourage the patient to disclose his or her feelings in relation to skin condition. Rational होगा through verbalization of the patient's feeling his or her may directed away from linking self-worth and physical appearance. Implementation होगा encourage the patient to disclose his or her feeling. Number 4 होगा aid patients in putting his or her condition into word or appropriate responses to certain question. Implementation होगा it is important to assist patient in finding a response and explanation with regards to the condition of the skin. Implementation होगा aid in the questionnaire response. After providing these interventions, we write the evaluation steps. तो ये देखते हैं evaluation में. तो फोर्थ केयर प्लान का यहाँ evaluation होगा. Now patient expressing their feelings and resume daily activity. जो गोल था हमारा हमने अचीव किया है वही डिफरेंट इंटरवेंशंस. तो ये था नर्सिंग केयर प्लान नंबर 4. नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर 5 फॉर चिकन पॉक्स. केयर प्लान नंबर 5 होगा यहाँ पर अक्यूट पेन. तो देखते हैं इसमें असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा पेशेंट वर्बलाइज अबाउट पेन. ऑब्जेक्टिव डाटा पेशेंट रिपोर्ट ऑफ पेन स्कोर 8 out of 10. नर्सिंग डायग्नोसिस अक्यूट पेन रिलेटेड टिश्यू डैमेज गोल होगा टू रिलीव पेन. इंटरवेंशन देखते हैं फर्स्ट असेस द पेशेंट्स पेन यूजिंग ए पेन स्केल एंड डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग्स. रेशनल होगा assessing the patient's pain and documenting it allow for the proper pain management. Implementation होगा assess the patient's pain. Number second, administer pain medications as ordered and assess its effectiveness. रेशनल होगा reduce the patient's pain. Implementation होगा administer analgesics as prescribed. Number third, teach the patient relaxation techniques such as deep breathing and guided imagery. रेशनल होगा alleviate the patient's pain. Implementation होगा teach about the relaxation technique. Number 4, provide calm and cool environment. रेशनल होगा patient feel relaxed in calm environment. Implementation होगा provided calm and cool environment. Number 5, encourage the patient to verbalize their pain experience and provide emotional support. रेशनल होगा to reduce anxiety and promote a sense of well-being. Implementation होगा emotional support provided to patient. After providing these interventions, we write the evaluation steps for this care plan. तो यहाँ पर evaluation होगा care plan number का. Now pain is relieved and patient feel comfort. में जो हमारा गोल था to relieve pain वो हमने अचीव किया by these interventions जो patient को हमने प्रोवाइड कराएँ. तो इस तरह से हम नर्सिंग केयर प्लान नंबर 5 को कंप्लीट करते हैं.
तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने चिकन पॉक्स का नर्सिंग केयर प्लान लर्न किया। तो आपको वीडियो कैसा लगा इसके लिए अपने लाइक्स कमेंट जरूर भेजिएगा and share this video with your friends and subscribe my YouTube channel here Anand's Nursing File and press bell icon also. Thank you.